In the last class, we were discussing about introduction to inverse trigonometric functions. So before starting inverse of inverse trigonometric function, we have seen what is the meaning of inverse of a function. And you have seen that inverse exists only when the original function is 1, 1 and onto. And before moving on, I just want to tell you some more points. See, if you have two functions, f of x and g of x, we can obtain new functions from these two functions, operations of functions. For example, they say f of, if you want to find f of x plus g of x, or f plus g of x, that is nothing but f of x plus g of x. F plus g is a new function. F minus g, which is equal to f of x, defined as f of x minus g of x. Another one is f into g of x, which is defined as f of x into g of x. Then f upon g, this is another function of x, which is equal to f of x over g of x. These are some functions, some operations on functions. Then last year I told you about composition of functions. आपको याद है f composition g of x. Do you remember that? Yes or no? Do you remember this? It is known as composition of functions. That is f composition g. It is defined as f of g of x. I will come to that point. Before that, example, if I say some example, suppose your f of x is x square, your g of x is 3x plus 1. Then if you want to find f of f plus g of x, new function. So you have to just add this. So x square plus 3x plus 1. Look at this. You got a new function. The original function f of x is x square. G of x was 3x plus 1. So from these two given functions, you obtained a new function through the operation addition of functions, then subtraction of functions, multiplication of function, division of functions. So here, then f minus g of x is equal to just x square minus 3x plus 1. So minus 3x minus 1. So you got another function f into g of x, which is x square into 3x plus 1. So if you want, you can write this as 3x cube plus x square. Then f upon g of x, which is equal to x square divided by 3x plus 1. So in all these four cases, you got a function, new functions from the two given functions. Now, before coming to this composition of functions, did I told you about this or not? Just tell me. Anybody? Did I told you about composition of functions? So I will come to composition of functions. Before that, so you see this, these are known as operations on functions. So different operations: addition, subtraction, multiplication, division, and composition. So while doing these operations, you are getting new functions. Now, what about the domain of these new functions? So for all these functions,
for all these functions, domain is domain of f intersection domain of g. जो f एंड g का डोमेन है दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा. इधर ऑल्सो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g आएगा, बट have to additionally have to avoid the points where g of x is equal to 0, because g of x 0 है तो denominator में 0 आएगा, then this function is not defined. So all these functions, addition, subtraction, multiplication, division, you are getting new functions from the two given functions, and the domain of the new functions is the points which are common to both the functions, domain of f and domain of g. In addition to that, f upon g of x, in this case, additionally, we have to avoid the points where the denominator is equal to 0. So here we know that domain of f. Can you say what is the domain of f? Your function is x square. So what is the domain of f? What you can say about the domain of this function? Domain मतलब set of all input values. Real number. All real numbers. All real numbers. You can give any real number. You can find the square. X square you will get. ऐसे कोई भी real number नहीं है, square नहीं है करके. So domain is set of all real numbers. And what about the domain of G? What about the domain of G? G of x is 3x plus 1. It's a linear function. So domain means set of all input values. So you have to check is there any values there in which we cannot find the value of the function. ऐसे कोई वैल्यू है कि x के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो g of x का वैल्यू नहीं मिलेगा करके. Is there any value for x that g of x does not exist? ऐसे कोई वैल्यू है क्या? No, sir. No, you can give any real number to x. 3 times that real number will be a real number plus 1 that will be a real number. So domain of f g is also set of all real numbers. Okay. So in all these three cases, first three cases, you got three new functions. 1, 2, 3 new functions. All their domain. So intersection of here in this case real numbers intersection real numbers. So which will be real number itself, isn't it? So domain is set of all real numbers. So for the last function, domain is set of all real numbers. There is no doubt in that. But we know that 3x plus 1 is equal to 0 implies x is equal to minus 1 by 3. So आपको क्या करना, minus 1 by 3 avoid कर लेना. नहीं है तो क्या है, minus 1 by 3 है तो this function will not exist. So the new function, domain of new functions is nothing but the domain of the intersection of the two given functions. The quotient of two functions का case में you have to additionally you have to avoid the point where the denominator is equal to 0. 0. Okay, that's all. So now coming to this is another operation, f composition g of x. Yes, it is read as f composition g of x, f composition g of x. So it is defined like this, it is f of g of x. Say your example just now we have seen f of x is equal to x square, g of x is equal to 3x plus 1. So f composition g of x, so that is f of g of x. इसका मतलब जैसे f of 3, जैसे आपको पता है f of x is equal to x square. So जब f of 3 चाहिए, f of 3 मतलब आप क्या कर सकते हैं, x के जगह क्या दे सकते हैं, 3 देते हैं, right?
आपको एफ ऑफ टू चाहिए तो यू हैव टू गिव टू इन प्लेस ऑफ एक्स. सो सिमिलरली हियर हमें एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स, ये जीरो, दिस सिंबल इज ट्रीटेड एज कॉम्पोजिशन, एफ कॉम्पोजिशन g of x. So it is like this: f composition g is a function. F composition g. It's a new function. It's an operation. There's addition, subtraction, multiplication, and division. Like that, it's a new operation, composition, and it's defined like this. This is equal to f of g of x. That means in f of x, in the place of x, you have to substitute g of x. Okay, so your f of x is x square. Your f of x is x square. So x के जगह g of x दे देना. So g of x क्या था? 3x plus 1. So 3x plus 1 the whole square. Got it? So this is equal to that. You can see a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. Clear? So then आपके माइंड में आ सकते हैं कि g composition f है क्या? Yes, g composition f is also defined. So that is g of f of x. उसका मतलब g of x में x के जगह f of x दे देना. So your g of x was 3x plus 1. So 3 x के जगह f of x दे देना. F of x is x square plus 1. Did you understand the point? Yes, sir. So f composition g, g composition f. Then ऐसे भी मन में आएगा f composition f. We we can take composition of one function with that function itself? Yes, it is f of x. That means in f of x, x के जगह f of x दे देना. f of x is x square. So x के जगह f of x देंगे तो x square, उसका square. So which is equal to x to the power 4. Similarly, you can find g composition g of x. Composition of g with, this is nothing but g of x. That means in g of x, so g of x is 3x plus 1. x के जगह g of x दे देना. So x के जगह 3x plus 1 दे देना plus 1. So which is 3 into 3, 9x plus 3 into 1, 3 plus 1, 4. देखो. So this is known as composition of functions. Composition of functions. Okay. F composition G, G composition F, F composition F, G composition G, whatever it is. Because I have seen some questions where composition of functions is asked. And in other cases like f plus g, f minus g, f into g, f upon g, addition, subtraction, multiplication, and division, you have seen that domain is set of all points which are common to the domain of f and g. In case of division, we have to avoid the point where the denominator is equal to 0. But that is not the situation in this case. This is for your general information I am saying. See, they say, can you tell me, और देखो f को ये वाला देखो, f कॉम्पोजिशन g of x चाहिए तो सबसे पहले इधर सेट होगा, फर्स्ट सेट इधर g ऑफ फंक्शन g होगा, क्योंकि इधर एक फंक्शन वेरिएबल है तो x है, तो इस x को लेके जाएगा g ऑफ x में. करेक्ट. देन सेकेंड सेट इधर से इधर होगा फंक्शन f, क्योंकि ये फंक्शन इसको, ये g ऑफ x को f लेके जाएगा f ऑफ g ऑफ x में. अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो f composition, Yes, sir. f composition g of x is a function from the domain of g to the
कोडोमेन ऑफ एफ. दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टैंड. क्योंकि so इधर हमने एफ पहले बोला, इसका मतलब ऐसे नहीं पहले एफ से शुरू कर रहे करके. एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. उसका उसका मीनिंग सबसे पहले जी ऑफ एक्स होना चाहिए. सो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स किधर से, जी का डोमेन से जी का कोडोमेन. सो जी का डोमेन में एक पॉइंट एक्स, the image of that x under this function g, that is nothing but g of x. So इधर तक आ गया g of x. अभी that the codomain of g, that is the domain of f, then image of g of x under the function f, that is nothing but f of g of x. So your Mm. f composition g of x is defined as f of g of x, and this is a pictorial representation. इसमें से आपको समझ में आएगा f composition g of x is a function from the domain of g to the codomain of f. Now then domain of new function f composition g of x is, आप क्या बोल सकते हैं? Let me check what you understood. Domain of f composition g, बोलो. डोमेन ऑफ एफ कॉम्पोजिशन जी क्या होगा? ओके, सबसे पहले ये बोलो डोमेन ऑफ एफ कॉम्पोजिशन जी किधर का पॉइंट्स होगा? जी का डोमेन का पॉइंट्स होगा और एफ का डोमेन का पॉइंट्स होगा. टेल मी. सो मैंने बोला G composition, F composition G, F composition G is a function from domain of G to the codomain of F. तो ये सिर्फ समझने के लिए पिक्चर के रूप से मैंने बताया. अभी whenever one question came to find the domain of F composition G, can you tell me what is it? Hmm? So can you explain it again? It can be from where? It Like can be from where? Like a set of a set of all points from the domain of G, right? So domain of G से होना चाहिए ना, isn't it? Correct, because F composition G of X शुरू कर रहे किधर से? Domain of G से शुरू कर रहे. So domain of F composition G is set of all points from the domain of G. Now my question is, G में जितना भी पॉइंट्स है पूरा का पूरा पॉइंट F कॉम्पोजिशन G का डोमेन में आएगा क्या नहीं? Did you understand my question? From the graph itself, from the pictorial representation, I have told you F composition G of X is a function from the domain of G to the codomain of F, because F composition G of X is defined as F of G of X. So सबसे पहले G of X चाहिए. So G का डोमेन में एक पॉइंट X. So image of this X under this function G is nothing but G of X. Then image of this G of X under this function is F of G of X. So that is why G composition F composition G is a function from the domain of G to the codomain of F. That is clear. Now, so I'm going to find the domain of this F composition G. So what you understand from here is from here to here. This is F composition G that we understood. So of course
एफ कॉम्पोजिशन डी का डोमेन इधर ही होगा. So that is why I told you domain of F composition G is set of all points from the domain of G. Now my question is all the points of G ये डोमेन G का जो डोमेन में जितना भी पॉइंट्स है पूरा का पूरा पॉइंट्स F composition G का डोमेन में आते हैं क्या नहीं? That is my question. There is no doubt that F composition G का डोमेन points from the domain of G होगा. There is no doubt in that. Now my question is जो domain of G में जितना भी points है पूरा का पूरा points domain of F composition G में आते हैं क्या नहीं? सपोज मैंने इधर एक पॉइंट लिया से 2 एग्जाम्पल के लिए बता रहे. तो इसका g of 2 आ रहे से सम 5. ओके बट ये 5 इसका बाहर आ रहे. मान लीजिए 5 is not here, 5 is not there. जो 2 का आउटपुट आ गया 5. सपोज वो 5 एफ का डोमेन में नहीं आया है तो आप एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? नो सर. नो क्योंकि जो इधर जो पॉइंट है जी का डोमेन में एक पॉइंट है. जब आप उसका जी ऑफ एक्स निकालेगा उसका इमेज निकालेगा वो इमेज किधर आना चाहिए? एफ का डोमेन में आना चाहिए. अगर Yes, वो sir. अगर वो एफ का डोमेन में नहीं आया तो उधर से उसका एफ इमेज हम नहीं निकाल सकते. सो what you can say is domain of F composition G is a set of all points from the domain of G such that G of X image of that point under the function F such that G of X is in the domain of F. सो आप पूछेंगे ऐसे कोई फंक्शन आते हैं क्या? है देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट. ऐसे कुछ नहीं. इधर जी का डोमेन में एक पॉइंट लिया उसका आउटपुट लिया. सो आउटपुट एफ का डोमेन में आना करके नहीं तो उसका आउटपुट एफ में आना चाहिए. वैसे वाला पॉइंट्स का कलेक्शन होगा एफ कॉम्पोजिशन जी का डोमेन. सो दिस इज वन ऑफ द इट इज लिटिल ट्रिकी. सी समझने में मे बी थोड़ा आपको तकलीफ लगेगा. It is not easy as like addition, subtraction, multiplication, division. In those cases, it is very easy. Addition, subtraction, multiplication, division. The domain is set of all points which are common to both the domain of F and domain of G. But F composition G का केस ऐसे है कि इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग. सो सबसे पहले हमें यही समझना चाहिए कि F composition G of X is a function from the domain of G to the codomain of F. तो इसका डोमेन क्या होगा? एफ कॉम्पोजिशन जी का डोमेन क्या होगा? एफ कॉम्पोजिशन जी का डोमेन जो जी का डोमेन में जितना भी पॉइंट्स होगा वो पॉइंट्स ही होगा. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ जी. बट कंडीशन इज देयर व्हेन यू फाइंड जी ऑफ एक्स वो जी ऑफ एक्स एफ का डोमेन में आना चाहिए. एफ का डोमेन में नहीं आया है तो हम उसका एफ ऑफ दैट फंक्शन इमेज ऑफ दैट पॉइंट अंडर द फंक्शन एफ नहीं निकाल सकते. सो व्हेनेवर दैट जी ऑफ एक्स वी फाइंड दैट जी ऑफ एक्स it should come in the domain of F. अब ये सब थियोरी भूल जाएंगे तो इतना तो याद रख देना. डोमेन ये तो समझने के लिए बताया. अभी इतना आप समझ लेना F कॉम्पोजिशन G है तो डोमेन विल बी ऑलवेज डोमेन ऑफ G इन सच ए वे दैट G का जो आउटपुट है G ऑफ X है F का डोमेन में आना चाहिए. क्लियर? ओके
So maybe Yes, sir. I will show you one example, then you may understand. It is not in your syllabus, but I just wanted to let you know that. See this. So this is what we are discussing now. The domain of a composite function. So the domain of a composite function f composition g of x is the set of those inputs in x, that is in the domain of g, for which g of x is in the domain of f. So that is what we discuss now here. इधर x होगा तो ये x जब हम g of x निकालेगा, g of x f का डोमेन में आना चाहिए, तभी हम इधर f कॉम्पोजिशन g of x निकाल सकते हैं. So इधर से सेकंड सेट है, थर्ड सेट है f, फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट है g. सो आपको डोमेन चाहिए तो g का डोमेन में जितना भी पॉइंट्स है पूरा का पूरा पॉइंट्स f कॉम्पोजिशन g का डोमेन में आ जाएगा, f कॉम्पोजिशन g का डोमेन में आ जाएगा. बट कंडीशन इज दैट जब आप g ऑफ x निकालेगा, दैट g ऑफ x f का डोमेन में आना चाहिए. अगर f का डोमेन में नहीं आया है तो उसका इमेज अंडर f नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका डोमेन का पॉइंट नहीं है. Yes, sir. Yeah. So how to find given function, how to given a function f composition g of g, how to find the domain? So you have to find the domain of g and you have to find the domain of f. दोनों हमको चाहिए. Domain of g ये क्या है हमें पता होना चाहिए, domain of g, and also ये domain of f ये भी हमें पता होना चाहिए. Then हमें वैसे इनपुट्स निकालना है जो g का डोमेन में, जब आप उसका आउटपुट निकालेगा, एनीवे एफ कॉम्पोजिशन जी का डोमेन जी का डोमेन का ही पॉइंट्स होगा, बाकी किसी का भी पॉइंट्स नहीं होगा. बट उस डोमेन का कुछ स्पेशल पॉइंट्स ऐसे है कि जब हम आउटपुट निकालेगा वो आउटपुट एफ एफ का डोमेन में आ जाएगा. ओके. सो फॉर एग्जांपल हियर एक सिंपल एग्जांपल देखो. ये तो दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन. Many times they will ask you to find the domain and range of other functions. So anyway, see this. So इधर एक function देखो f of x. f of x is, I'm writing it, f of x is 5 divided by x minus 1. g of x is 4 divided by 3x minus 2. आपको पता है it is rational function. rational function का domain क्या होते हैं, सभी रियल नंबर होते हैं, बट इतना है कि उसमें से जब डिनोमिनेटर 0 होगा वो पॉइंट्स अवॉइड कर लेना. सो डिनोमिनेटर इधर 0 होते हैं 1 में, सो f का डोमेन होते हैं. सो इधर इन दिस पर्टिकुलर केस आपका f का डोमेन, दिस इज योर f, इधर से इधर होते f, इधर से इधर होते g. सो आपका f का डोमेन है, कंसेप्ट समझ लेना क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हर रियल नंबर आएगा, इधर हर रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट 1. जी का डोमेन देखो, हर रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट 2/3. ओके. क्योंकि इधर डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रैशनल फंक्शन है, जब डिनोमिनेटर 0 होगा उस पॉइंट अवॉइड कर देना, डिनोमिनेटर 0 होगा 2/3 में. तो हमें ये समझ में आए कि g का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट 2/3. f का डोमेन है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट 1. अभी हमें पता है जैसे इधर से इधर तक होगा f कॉम्पोजिशन g. अभी उसका डोमेन हम निकाल रहे, तो उसका डोमेन में हमें यही देखना है कि इधर जितना भी पॉइंट्स है उसका कौन सा का पॉइंट का आउटपुट इसके अंदर आएगा. तो इसके अंदर क्या आते हैं, पूरा रियल नंबर आते हैं, है ना. Yes. बट Yes. कौन सा पॉइंट नहीं है, 1 नहीं है. हाँ, yes, sir. या उसका मतलब इधर का कोई भी एक आउटपुट 1 नहीं आएगा. दैट मीन्स हमें देखना है कि 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 का भी 1 होते हैं क्या. समझ में आ गया. इधर कोई भी पॉइंट का, बाकी सब इधर है, जो भी आउटपुट आएगा
इधर सभी रियल नंबर है, 1 छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर है, isn't it? So इसका तो आउटपुट तो रियल नंबर ही आएगा ना. ये g of x is 4 by 3x minus 2. So आपको आंसर हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा, जो आउटपुट रियल नंबर ही होगा, isn't it? So only thing is इधर f का डोमेन में 1 नहीं है. हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसे कोई पॉइंट है क्या जो g का आउटपुट 1 आते हैं क्या. So that is why either I'm checking 4 divided by 3x minus 2 is equal to 1. So 3x minus 2 is equal to 4, 3x is equal to 6, x is equal to 2. That means इधर एक पॉइंट आपने 2 लिया, ये 2 आते हैं ना, because it is real number, set of all real numbers other than 2 by 3. अब g of 2, when you find g of 2, it is 1. But is 1 is inside this particular domain? No, because domain of f is set of all real numbers other than 1. So 1 किधर है? 1 इधर. So 1 है, but 1 is not a member of domain of f. So 1 domain of f नहीं है, तो 1 का इमेज अंडर f हम नहीं निकाल सकते. तो उसका मतलब ये f कॉम्पोजिशन g का डोमेन होगा. कौन सा डोमेन होगा? ये r माइनस 2 by 3 होगा. बट अभी इसमें से कौन सा पॉइंट और सब्ट्रैक्ट करना? 2. अंडरस्टूड? Domain of f composition G is the set of all points from the domain of G itself, provided जब g of x निकालेगा वो f का डोमेन में आना चाहिए था. So इधर f का डोमेन में हमें पता है कि 1 छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर है. तो हम यही देख रहे थे कि इधर g में कोई भी पॉइंट का, g का डोमेन से कोई भी पॉइंट का आउटपुट 1 आते हैं क्या, क्योंकि 1 इसमें से नहीं है, बाकी सब कुछ तो है. सो 1 इसमें से नहीं आ. सो हम यही चेक कर रहे हैं सिर्फ 1 किसी का आउटपुट आते हैं क्या. सो हमने देखा, सो g of x is 4 by 3x minus 2 is equal to 1 करके देखा, हमें मिला 2. दैट मीन्स 2 का आउटपुट 1 आते हैं अंडर दिस फंक्शन g. बाकी कोई भी पॉइंट के लिए कोई इश्यू नहीं, बाकी सभी पॉइंट के लिए आउटपुट रियल नंबर ही आएगा, कोई भी 1 छोड़ के कोई भी रियल नंबर ही आएगा, वो सब कुछ f का डोमेन में है. सो या सो f कॉम्पोजिशन g का डोमेन g में जितना भी पॉइंट्स है पूरा का पूरा पॉइंट्स होगा सच ए वे दैट उसका आउटपुट g ऑफ x में आएगा. सो सभी पॉइंट्स, बट 2 का आउटपुट f ऑफ डोमेन ऑफ f में नहीं आ रहे, सो वो भी कम कर दिया. दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आप यही बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट 2 by 3 एंड 2. तो आपका रियल नंबर है तो ये 2 by 3 ये वाला पॉइंट, सपोज 2 by 3 ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, 2 ये वाला पॉइंट भी नहीं आएगा. इसलिए इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 by 3 यूनियन 2 by 3 नहीं है, ओपन सर्कल 2 by 3 टू 2, 2 by 3 2 नहीं, यूनियन 2 to इन्फिनिटी. ये सिंबॉलिकली लिखा है. दिस इज यूज इंटरवल नोटेशन यूज करके. दिस इज सिंपली इंटरवल नोटेशन. अंडरस्टूड? That's all. Interval notation. So from here we understood that the domain of all real numbers is the domain of f composition G is a set of all real numbers in the domain of G in such a way that G का आउटपुट डोमेन ऑफ f में आएगा. अगर नहीं आ रहे तो वो वाला पॉइंट अवॉइड कर लेना. तो इधर 2 का आउटपुट 1 था, वो 1 f में नहीं है, डोमेन ऑफ f में नहीं था, इसलिए ये 2 हमने अवॉइड कर दिया. Clear? Yes, sir. That's a concept. And I just wanted to tell you one more thing. ये मैंने already आपको क्लास ग्रुप में बोला था. देखो जो 3 मिनट बाकी है उसमें से ये बता देंगे. सी आपने ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी देखा था. सो ये में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सपोज m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, देन इट इज n. सो a क्रॉस b में m इंटू n एलिमेंट्स होगा. a क्रॉस b का सबसेट, सो पावर सेट ऑफ a क्रॉस b
power set of A cross B. It is 2 to the power mn elements hoga, 2 to the power mn elements. That is why 2 to the power mn, that much relations are there, isn't it? So you know how to find number of relations. If you know, suppose your A may m elements, say this is your A, m elements, B may n elements, then 2 to the power mn relations are there from A to B. 2 to the power mn relations are there, or 2 to the r and s, the 2 to the power rs relations are there from A to B. But now there are multiple choice questions which comes in such a way that they will ask you how many functions are there from A to B. So it is not possible for us to write all the functions and count. Okay. They will ask you how many one functions are there from A to B. How many onto functions are there from A to B. How many one and onto functions are there. So it is not easy to count at that time. Byte के सब लिख के count करना आसान नहीं होगा. So there are formulas to find it. So number of function from A to B is q to the power p, number of elements of B to the power number of elements of A. By here the formula. Similarly, number of one functions from A to B. So it is 0 if p greater than q, क्योंकि A में ज़्यादा elements है तो one नहीं होगा, क्योंकि इधर जो extra element आएगा उसके लिए image नहीं होगा. That is why when p is greater than q, one relation नहीं है, 0 बिल्कुल. p less than or equal to q है तो QPP परम्यूटेशन हमने लास्ट ईयर पढ़ाई किया था. QPP फॉर्मूला तो याद रख देना. QPP. Similarly, number of on to functions from A to B, P less than Q. That means A में less elements है तो 0, क्योंकि A में less elements है, B में ज़्यादा elements है तो B का हर एक element को इधर pre image नहीं होगा. Then P greater than or equal to Q है तो फॉर्मूला देखो, sigma R is equal to 1 to Q minus 1 to the power Q minus R QCR R to the power P. Then bijective functions, one and on two functions. One and on two function दोनों का नंबर सेम होना चाहिए तभी वन and on two होते, तब one and on two functions, नहीं तो bijective functions are p factorial. If number of elements are not same, there is no bijective relation, because bijective है तो both set have same element of elements. Then हमने reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, equivalence relation पढ़ाई किया है. ट्रांसिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन का नंबर काउंट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट फॉर काउंटिंग number of reflexive relation in a set, if there are n elements, number of reflexive relation is 2 to the power n into n minus 1. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत काम आएगा. Similarly, number of symmetric relation 2 to the power n into n plus 1 by 2. So these are the formulas you should by heart, because multiple choice question they will ask you about how many number of functions, one function, on two function, bijective function, reflexive relation, symmetric relation, ये सब वो पूछेगा. So once you know the